हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेरी ट्यूटोरियल बाय अनिशा मंगना। आज की हमारी जो वीडियो है वो है आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग एंड दैट हैज बीन रिटन बाय माया एंजेलू एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोएम जो आईसीएसई बोर्ड में भी आती है, बीए में भी पूछी जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी है। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज आई वुड बी गिविंग यू ईच एंड इम्पोर्टेंट आई वुड बी टेलिंग यू अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस poem. This poem, the poetess of this poem is African American writer. और उस टाइम के जो conflict थे between the African American और the American white Americans, उनके बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे से depict किया गया है. Then Maya Angelou is widely regarded as a black woman poet laureate. Right, and this particular poem, why I know why the caged bird sing, has been written in 1969. Now, what is the poet about? Poem is about the autobiography of the poet, then describing the young and the early years of the American writers and poet Maya Angelou. कि उसने क्या कुछ फेस किया उस टाइम पीरियड पे, ये सब कुछ उसमें मेंशन किया गया है. तो पोएम में हमें क्या दिखेगा? एंजेलो यूजेस हर ऑटोबायोग्राफी टू एक्सप्लोर द सब्जेक्ट. बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो क्रूशियल जो टॉपिक थे उन्होंने उसको हाईलाइट किया. किस टाइप के टॉपिक्स को हाईलाइट किया? जो कि ऑपरेशन, प्रेजुडाइसेस, इस तरह के जो टॉपिक्स थे उनको हाईलाइट किया. अलॉन्ग विद दिस new ways about women's lives in male dominating society. अब जो लेडी है जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहती है उसके बारे में भी डिपिक्ट किया गया. राइट, देन इट टॉक्स अबाउट द आइडेंटिटी क्राइसिस, अबाउट द रेप, अबाउट द रेसिज्म एंड अबाउट द लिटरेसी. राइट, हाउ इट वाज डिफिकल्ट फॉर अ ब्लैक अमेरिकन टू स्टे ओवर देयर. Now, how it was received? कैसे उसको वेलकम किया गया? ये जो पोएम थी. Caged Bird was nominated for a National Book Award in 1970 and remained on the New York Times paperback bestseller list for 2 years. बेस्ट सेलिंग बुक थी क्योंकि इसमें एक्चुअल जो सर्कमस्टांसेस लोग फेस कर रहे थे उसको दिखाया गया था. The poem is divided into 6 stanzas describing the stage of two poets. अब वो white Americans और black Americans जो थे उनको 2 birds के साथ represent कर रहे थे. ठीक है, caged bird, the one which is free and floats and dare to claim the sky, right, which is the free bird जो white Americans थे. And second was the caged bird, which is behind the rage of the bar of rage, जिसके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है. राइट, बिकॉज दे डोंट हैव द फ्रीडम एंड दे आर द ब्लैक अमेरिकन एंड द केज्ड बर्ड. ठीक है, तो जो व्हाइट अमेरिकन है उनको फ्री बर्ड बोला गया है और जो केज्ड बर्ड है वो ब्लैक अमेरिकन है. स्टैंजा 1. The free bird leaps on the back of the wind and floats down streams till the current end, and dips his wing in the orange sun rays and dare to claim the sky. अब यहाँ पर क्या है? First stanza marks the freedom of the bird flying in the sky. तो इसमें क्या दिखाया गया है? Free bird which is flying in the sky. Right? Poets say that the bird is leaping on the back of the wind. She is flowing up and down in the wind, and she claims the whole sky as her own, which represent the freedom, that she is freedom, that she can do anything, right? And freedom it is enjoying by moving about and gliding freely to the air. अब वो जो फ्री बर्ड है वो कहीं पर भी आ जा सकती है, वो विंड के साथ फ्लो चल रही है. ठीक है, और ऊपर और नीचे एयर के साथ मूव इन कर रही है. राइट, इट hovers over a stream of wind and floats downwards to where the current of streams end. राइट, तो वो क्या है? ऊपर से नीचे तक आ रही है जहां तक स्ट्रीम एंड होती है. And the wind is calm, it dips its wing in the sea of the orange sunlight. राइट, इसमें एक हाइपरबली भी है कि वो क्लेम कर रही है पूरी स्काई को, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू क्लेम द sky.
राइट। तो वो क्या कर रही है, उसके जो विंग्स हैं वो क्या है, वो डिप कर रहे हैं, मतलब वो रिफ्लेक्शन आ रही है। किसकी रिफ्लेक्शन आ रही है? ऑरेंज सनलाइट की, राइट। The bird is shown in the state of great tranquility. She is very satisfied. The bird is very satisfied because it is free to move here and there. It has the freedom to move about wherever it desires. It is so utterly free and without restraint that it dares to claim the sky. The whole firmament is its own big home. उसको लगता है कि पूरा जहान उसका है और वो कहीं पर भी आ जा सकती है। वो एक हाइपरबोले भी यहाँ पर डिपिक्ट होता है जहां वो कहती है इट डेयर टू क्लेम द स्काई। सेकेंड स्टांजा में क्या कहती है? But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bar of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he open his throat to sing. अब ये जो पूरा स्टांजा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केज्ड बर्ड को, right? In the second stanza, poet contrasts the situation by presenting the image of a caged bird. अब दो कंट्रास्ट जो है वो शो किए गए हैं, फ्री बर्ड और केज्ड बर्ड। पहला जो स्टांजा था वो फ्री बर्ड को डिनोट करता था और जो सेकंड स्टांजा है वो केज बर्ड को डिनोट कर रहा है। द केज बर्ड, अब वो जो केज बर्ड है उसके पास जगह तो है नहीं आने जाने की, ठीक है, तो शी कैन हार्डली मूव, ठीक है, और वो देख भी नहीं सकती, उस जो केज है उसे बाहर भी नहीं देख सकती, क्योंकि कितना देख लेगी, जितना उसका विजन जाएगा उतना ही देख पाएगी, राइट। द केज बर्ड ट्राइज टू गो आफ्टर हिज केज इन वेन। द केज इज नैरो एंड इट्स मेटाफोरिकली बार्स आर ऑफ रेज, ठीक है। रेज क्या होता है? गुस्सा, ठीक है। अब वो जो बर्ड है इट इज ट्राइंग टू मूव बट शी कांट मूव, व्हाई? Because the cage is narrow, right? And then the poets talk about the bar of rage. अब बार जो है वो रेज का एक सिग्निफिकेंस दे रहा है, ठीक है, उसके अंदर भी गुस्सा भरा हुआ है। क्यों? बिकॉज शी हैज टू फेस द ऑपरेशन, ठीक है, जो रेसिज्म है वो उसको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, उसकी जो फ्रीडम है वो चली गई है। तो दैट इज द बार इज फुल ऑफ रेज, जो व्हाइट अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन के ऊपर अपना शो कर रहे थे। द केज बर्ड इज सीन टू बी एंग्री विद द सिचुएशन, इट डिजायर्स विद इट्स ऑल हार्ट टू एस्केप इट्स प्लाइट, बट द केज बर्ड कैन नॉट सी बियॉन्ड हिज केज। मतलब उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा केज के बियॉन्ड, राइट। वेरएज जो फ्री बर्ड थी वो कहीं पर भी आ जा सकती थी और कुछ भी देख सकती थी। अब यहाँ पर एक बहुत ही पिटी चीज दिखाई गई है, मिजरेबल चीज दिखाई गई है। जो केज्ड बर्ड है उसके जो विंग्स हैं वो क्लिप्ड हैं एंड जो फीट्स हैं वो टाइड है, राइट। इट्स विंग्स आर क्लिप्ड, दैट इज इट्स फ्रीडम्स इज टेकन अवे, ठीक है। विंग्स आर एसोसिएटेड विद द फ्लाइट। अब वो विंग्स हैं तो कहीं पर भी उड़ सकती है, विंग्स क्लिप्ड है तो मतलब उसकी जो फ्रीडम है उड़ने की वो चली गई है। विच इन टर्न इज एसोसिएटेड विद द फ्रीडम। द वर्ड हिज विंग्स आर क्लिप्ड मीन्स दैट इट्स फ्रीडम इज फोर्सफुली टेकन अवे। शी इज नॉट गिवन इट as on his own, but it has been taken away or snatched away. It cannot fly even if desired to, and its feet are also tied. Bird tied to the ground represent an image completely opposite to its true nature of flight. एक contrast दिखाया गया है. This represents the fact of alienation of the bird. Irony here is that despite being in this utterly... In the third stanza, the poetess says that the caged will sings with the fearful thrill of the things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. Now in this particular stanza, what the poetess is showing, it is showing the stage of the bird who is caged, right, who want to speak about her miseries, but she is helpless, and in this helpless tone she can only sing, right, she can't cry, she can't
show anybody what she is going through. But what the people are thinking, on the contrast, the people are thinking that she is singing out of joy, right? Now, the caged bird has a wavering voice. He is singing of freedom, something he doesn't have. The idea of freedom is in mind, one he cannot achieve, so he sings about it. अब जो बर्ड है वो क्या ड्रीम करती है कि वो फ्री हो जाए, राइट? बट शी नोज दैट शी कांट बी फ्री. तो उसके लिए वो अपनी जो मिजरीज है, अपनी जो सफरिंग्स है, वो किसके माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है? थ्रू सिंगिंग. देयर इज फियर इन हिज वॉइस. उसकी जो वॉइस है, इट इज shivering, fearing, full of fear. He had never known what freedom tastes like. उसे कभी भी फ्रीडम देखी नहीं है, तो उसको पता नहीं है पर फ्रीडम है क्या. बट फिर भी उसके मन में एक होप है कि एक ना एक दिन मैं फ्री हो जाऊंगी एंड आई कैन टच द स्काई. बट होप टू हैव इट for its own. His voice can be heard from distant places on the hill where it inspires others to dream of the freedom. अब ये जो लाइन है जहां पर वो बोल रही है, it is heard at the distant places, distant hill, कि वो जो उसकी वॉइस है वो दूर दराज के इलाकों पर जा रही है और वो दूर से जो पक्षी हैं उनको वो इंस्पायर कर रही है कि you also hope for the freedom and you also dream for the freedom as I do. The caged bird doesn't sing of sadness, right? It is inspiring freedom, hope. ठीक है? तो वो जो सिंग कर रही है उसमें वो क्या कुछ है? सैडनेस है, फ्रीडम है, इंस्पिरेशन है, होप है कि मैं एक ना एक दिन free हो जाऊंगी, right? Now, fourth stanza. In fourth stanza, the poetess says that the free bird thinks of another breeze and the trade wind soft through the sighing trees and the fat worms waiting on a dawn bright lawn and he names the sky his own. राइट? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो फ्री बर्ड है, ऑन द कॉन्ट्रेरी टू द केज्ड बर्ड, जो फ्री बर्ड है, she is thinking of another breeze and she is flowing with the wind, right? She is touching the trees and it is communicating with trees, right? She can catch the fat worm so that she can eat it, right? And she is naming the sky his own, right? The free bird, on the other hand, reveals in his freedom. He enjoys flying through the trade wind that blows through the trees. Sighing trees, यहाँ पर sighing tree किसको बोला गया है? It refers to the sighing sound made by the breeze while passing through the leafy branches. It gives an indication to their lack of freedom as the trees are also tied to the ground like the caged bird. अब ये जो tree है उसको भी sighing tree क्यों बोला जा रहा है? Because it is also a sign for the freedom, because that is also tied to the ground. It cannot move anywhere, right? The free bird think of the fat worm that will be his food with the wind in his feather, water and earth beneath him and the whole sky with him. राइट? अब वो जो बर्ड है, ठीक है, वो किसके बारे में सोच रही है कि मैं जो वॉर्म्स है उनको कैच करूंगी, उनको प्रे करूंगी और उनको ईट कर लूंगी एज अ फूड. शी कैन मेक देम देयर food, and along with that she thinks that everything is under her, beneath her. Freedom and free bird, they are the two linking things. He feels majestic in his freedom and calls the entire sky his own domain. By name, the sky his own, the poet wishes to express that the bird knows himself to be the proprietor of the whole universe. Here the sky stands for the universe. Fifth stanza. But the caged bird stands on the grave of dreams, his shadows shout on a nightmare scream. His wings are clipped, his feet are tied, so he opened his throat to sing. राइट? अब उसमें क्या बोल रहे हैं? पर जो केज्ड बर्ड है उसके जितने भी ड्रीम्स हैं वो क्या बन गए हैं? दे हैव बिकम द ग्रेव,
right? They all are shattered, right? And this comes this comes into his mind and becomes a nightmare. And she screams like we scream in a nightmare, because his wings are clipped and his feet are tied. She can't move anywhere, she can't fly anywhere. That's why she opened her throat to sing. The caged bird, who is unable to follow her dreams by flying in the sky, who is unable to find its warmth and is a prisoner, stand of the grave of the dreams. He knows that his dreams of flying in a free firmament to experience freedom is futile. It's useless. Futile is useless. It's all is useless. His all hope of freedom are shattered to ground. His shadow shout on the nightmare scream. This highlights its miserable and pitiable condition that is even more adverse than the nightmare. The repetition of the above line emphasizes the poor condition of the caged bird. Now last one. The caged bird sings with a fearful thrill of the things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. Again the same stanza is repeated. The bird shouts determination to keep going after his dream of freedom. Moreover, the caged bird chooses to sing as this is the only freedom available to him. मतलब उसके पास एक सिंग करने के अलावा और कोई भी फ्रीडम नहीं है, इसलिए वो अपना गाना गा रही हैं, that he can enjoy without any restriction. And otherwise, what is happening? His wings are clipped and feet are tied. There's something the poet has felt at the heart, and that is why she uses the title, I Know Why the Caged Bird Sings. Now what is happening? She is comparing herself, the African Americans, to the caged bird and the free bird to the white Americans. This might be seen as the poet's message to raise your voice, to express yourself, even though the stronger want to suppress the weaker, and to never ever give up, no matter what situation we are in. Now she is giving a hope to each and every person that in whatever condition we are, we should never lose our hope and we should strive and live happily. Now literary devices. There is no definite rhyming scheme. It is written in free verse. Metaphor is used when she says the caged bird sings is a metaphor. Then irony is there. The caged bird sings with a fearful thrill. This sentence is ironic as the caged bird is one singing, not the free bird as we accept. Opposite हो रहा है दोनों का, ठीक है? The word fearful and thrill make us realize that actually it is not a happy tune but a desperate cry for a freedom. Vivid imagery है इसमें, physical appearances है. It is locked in a cage and cannot fly because his wings are clipped and feet are tied, so it stalks around. It shows the lack of the freedom of the bird. Orange sun rays, fat warm, dip his wing, open his throat. These all are the vivid imageries. Free bird and back of the wind are images for sight and feeling. Orange sun rays is for sight, throat to sing is for feeling. Then juxtaposition is there, where in this poem, two things are compared, two birds are compared in different situations. Moreover, the caged bird and the free bird have different point of views. Then personification. Even the trees are personified by using the word, the sign trees. And another personification is on the back of the wind. Here, wind is personified. Then symbolism. Appearance of the caged bird is a symbol of captivity. Free bird of freedom. Right? And this is again repeated turn by turn. Then what are the themes? There are two contrasting themes, freedom and slavery, despair and hope. So this was all for today's video. I hope you like it. Please subscribe and share. Thank you.